Here are four friends, Shashank, Rachel, Khizra, and Gurtej, seated on a metro rail on their way to work, talking. Let's begin. Shashank starts the conversation and says, आज तो ट्रेन बस मिस हो ही चली थी, अलार्म ही नहीं बजा, दौड़ लगानी पड़ी ट्रेन पकड़ने के लिए. I can't believe I almost missed the train this morning. My alarm didn't go off. Had to make a mad dash just to catch it. To that, Rachel replies, ओह मैं समझ सकती हूँ, मैं भी हमेशा बस बिल्कुल टाइम पर ही पहुँचती हूँ. बस कह लो दरवाजे बंद हो रहे होते हैं और मैं दौड़ रही होती हूँ. Oh, I know that feeling. I'm always cutting it close myself. I usually end up running for the doors just as they're closing. Then, Khizra adds to that and says, मैं भी यही करती थी, लेकिन अब मैं 10 minutes extra लेकर चलती हूँ. इसकी वजह से मैं बहुत बार बची हूँ. I used to do that too, but I've started giving myself an extra 10 minutes in the morning. It saved my skin so many times. Then Gurtej also chimes in and says, तुम सही हो खिजरा, मुझसे तो उठा ही नहीं जाता, मेरा सब कुछ जल्दी जल्दी में ही होता है. और अच्छी बात तो नहीं है, पर मुझे कुछ टाइम से कॉफ़ी पर डिपेंड करना पड़ रहा है काम पर जगे रहने के लिए. Good on you, Khizra. I just can't drag myself out of bed. I'm scrambling every morning, and the worst part is I've been relying too much on coffee lately to keep me awake once I'm at work. Then Shashank says, सेम यार, मैं हमेशा खुद से कहता रहता हूँ कि जल्दी सो जाऊँगा, पर हमेशा कुछ ना कुछ आ ही जाता है. कल रात नेटफ्लिक्स पर एक शो देखने लग गया. मैं उसमें इतना खो गया कि पता ही नहीं चला और मैं देखता ही रहा. Same here, bro. I keep telling myself I'll get to bed earlier, but something always comes up. Last night, it was a series on Netflix. Before I knew it, I'd got sucked into it and couldn't stop watching. And Rachel adds, हाँ मैं भी यही करती हूँ भाई, ये शोज़ तो पकड़ लेते हैं और फिर पता भी नहीं चलता कि 12 कब बज गए. Oh, I do that too. It's so easy to get caught up in these shows and then, before you know it, it's midnight. And Khizra says, और फिर उसका नतीजा तो अगले दिन भुगतना पड़ता है ना? मैं भी रात को शोज़ देखती थी, लेकिन अब मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी लेट जाऊँ, कोई किताब पकड़ लेती हूँ या कुछ और. जल्दी सोने में मदद होती है. And then you pay the price the next morning, right? I used to watch shows late at night too, but now I try to wind down earlier. I catch hold of a book or something. It helps me nod off easier. Gurtej replies, ये अच्छी हैबिट है जो डालनी चाहिए. लगता है मुझे भी आजकल में ये ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि अब तो मैं दिन भर अपने आप को बस घसीटता रहता हूँ. That sounds like a good habit to pick up. I guess one of these days I'm going to have to give it a shot as well. I feel like I'm just dragging myself through the day. Then Shashank says, हाँ ये तो सही बोला, दोपहर के 2 बजे तक मैं बिल्कुल थक चुका होता हूँ. उस वक्त मेरी नज़र दूसरी कॉफ़ी पर होती है. Yeah, I'm with you on that one. By 2 p.m. I'm running on fumes. That's when I start eyeing that second cup of coffee. Then Rachel adds to that and says, हाँ मैं भी वैसे ही करती हूँ, पर अगर मैं ज़्यादा कॉफ़ी पी लूँ तो रात को नींद नहीं आती और फिर ये रोज़ का बन जाता है, एक नेवर एंडिंग साइकिल की तरह. Oh, I'm guilty of that too. But then if I have too much coffee, I can't sleep at night and then the whole cycle starts over again. It's like a vicious cycle. Khizra adds to that, मैंने तो अब दोपहर में ग्रीन टी पीनी शुरू कर दी है. कॉफ़ी जितनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, पर मुझे जगाए रखती है बिना घबराहट दिए या बेचैन फील कराए. You know, I've switched to green tea in the afternoons. It's not as strong as coffee, but it keeps me awake without making me jittery. Gurtej replies, green tea, ये ट्राई करने लायक लगता है. वैसे भी मुझे कॉफ़ी थोड़ा कम करनी चाहिए. Green tea, I might give that a shot. I've been meaning to cut down on coffee anyway. Then Shashank says pensively, यार कभी कभी मन करता है ये रोज़ का आना जाना करना ही ना पड़ता. काश हम घर से ही काम कर सकते. Man, sometimes I wish we didn't have to do this commute every day. It'd be nice to just work from home. Rachel says, हाँ घर पे पजामा पहनकर काम करना, बस मुझे भी वही लाइफ चाहिए. लेकिन ऑनेस्टली अगर मैं घर से काम करती तो शायद काफ़ी आलस करती. बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस होते हैं.
Yeah, working in pajamas? Sign me up. But honestly, I'd probably slack off if I worked from home. Too many distractions. खिजरा रिप्लाइज मैं भी ऐसा ही सोचती थी पर लॉकडाउन्स के दौरान घर से काम किया और थोड़ा वक्त बाद एक रूटीन बन गया था इतना बुरा नहीं लगा आई यूज टू फील द सेम बट आई वर्क फ्रॉम होम ड्यूरिंग द लॉकडाउन्स एंड आफ्टर अ वाइल आई काइंड ऑफ गॉट इन टू द ग्रूव इट वॉजंट सो बैड वंस आई हैड अ रूटीन गुरतेज सेज सही बात है सब रूटीन का खेल है मुझे लगता है अगर तुम उस रूटीन को फॉलो करते रहो तो घर से काम करना प्रोडक्टिव हो सकता है ट्रू इट्स ऑल अबाउट रूटीन आई थिंक एज लॉन्ग एज यू स्टिक टू इट वर्किंग फ्रॉम होम कैन बी प्रिटी प्रोडक्टिव शशांक एड्स शायद लेकिन कभी कभी लोगों के आसपास रहना भी ज़रूरी होता है अगर मैं घर से काम करता तो मैं कोवर्कर्स के साथ जो छोटी मोटी बातें होती हैं वो मिस करता I guess so, but sometimes it's good to be around people too. If I worked from home, I'd miss all the chit chat with my coworkers. Then Rachel agrees and says, बिल्कुल और कभी कभी तो फेस टू फेस इंटरेक्शन भी ज़रूरी होता है लोगों के साथ आइडियाज़ शेयर करना ज़्यादा आसान होता है जब आप सामने होते हो Exactly. Plus, sometimes you just need that face-to-face interaction. It's easier to bounce ideas off people in person. हिजरा सेज हाँ ये तो सही है और मुझे लगता है सुबह उठकर तैयार होना कम्यूट करना इससे मैं काम के लिए मेंटली तैयार हो जाती हूँ Yeah, that's true. Plus, I think the routine of getting up, getting dressed, and commuting kind of gets me in the zone for work. Then Gurtej says, मेरे लिए तो उल्टा होता है ये कम्यूट मुझे थका देता है घर पहुंचने तक मैं इतना थक चुका होता हूं कि और कुछ नहीं कर पाता Well, for me, it's the opposite. This commute just wears me out. By the time I get home, I'm too tired to do anything else. Shashank agrees to it and says, हाँ समझ रहा हूँ कभी कभी ये आना जाना काम से ज़्यादा थका देता है I hear you. Some days it feels like that the commute takes more out of me than the work itself. And then Rachel replies, अरे हम सभी का यही हाल है पर चलो कम से कम वीकेंड्स तो हैं रिलैक्स करने के लिए है ना Oh, we're all in the same boat, but hey, at least we have the weekends to recharge, right? And then Khizra adds, बिल्कुल वैसे वीकेंड्स की बात चली है किसी के कोई इंटरेस्टिंग प्लान्स डेफिनेटली स्पीकिंग ऑफ वीकेंड्स डज एनीवन हैव एनी फन प्लान्स गुरतेज रिप्लाइज ज़्यादा कुछ नहीं बस आराम करना है और नींद पूरी करनी है नॉट रियली आई विल प्रॉबेबली जस्ट टेक इट ईजी एंड मे बी कैच अप ऑन सम स्लीप टू दैट शशांक सेज सेम हियर और हिम्मत हुई और शौक जगा तो थोड़ा वर्कआउट भी करने की कोशिश करूँगा सेम हियर आई माइट ट्राई टू स्क्वीज इन अ लिटिल वर्कआउट इफ़ आई एम फीलिंग एम्बिशियस एंड रेचल सेज टू दैट वीकेंड पर इतनी हिम्मत वाह ये तो एक रेयर साइट है एम्बिशियस ऑन द वीकेंड नाउ दैट्स अ रेयर साइट खिजरा रिस्पॉन्ड्स सही कहा लेकिन कभी कभी कुछ नया ट्राई करना अच्छा लगता है लाइफ इंटरेस्टिंग रहती है Right, but sometimes it's good to switch things up, keeps life interesting.